Today we will study the new unit which is Fourier series. So before starting to start the Fourier series, I am writing some important formulas which are important in Fourier series. First of all, minus pi to pi cos of mx dx is equals to 0 when m is not equal to 0. Minus pi to pi sine of mx dx is equals to 0. Number third here, minus pi to pi sine of mx cos of nx dx is equals to sine of mx cos of nx dx is equals to 0. यहाँ पे बेसिकली यहाँ जो हमने पढ़ा है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन उनकी डेफिनेशन लगा के हमें फॉर्मूला लिख रहे हैं. माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0. माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0. माइनस पाई टू पाई कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0. नाउ ये तीन फॉर्मूला. उसके बाद है हमारा cos of mx cos of nx dx is equals to cos of mx cos of nx equals to 0 when m is not equal to n. m और n इक्वल नहीं है तो ये 0 है. पाई when n is not equal to n is not equal to 0. अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, m equals to n है ये. दिस इज m. अगर m और n अलग अलग है तो दिस इज 0. when m equals to n है बट ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है, then पाई 2 पाई when m is equals to n is equals to 0. जब m और n आपके दोनों इक्वल हैं और 0 के इक्वल हैं ये, तो इसकी वैल्यू है वो ये होगी. सिमिलरली माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स. इसकी वैल्यूज हैं आपके पास साइन ऑफ एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स 0 when m is not equal to n. when m और n अलग अलग नंबर्स हैं then it is 0 and pi then m is equals to n. जब m और n इक्वल हैं then जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है पाई. Similarly, these are the formulas and there is an important formula that is ये आपने शायद क्लास में ही पढ़ा है. e to the power ax sin of bx dx की वैल्यू होती है e to the power ax power a square plus b square into a sin bx minus b cos of bx. ये तो आई थिंक आप लोगों ने 12th में पढ़े हैं ये फॉर्मूला. सिमिलरली इसमें e to the power ax अगर इसके here we have cos of bx dx then it is a to the power ax over a square plus b square into a cos bx plus this is a cos bx plus b sin bx. आई थिंक ये फॉर्मूला होता है आपका. तो ये जो तीन फॉर्मूलाज ये जो भी लिखे हैं, दो ये दो इससे पहले दो वो, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं और इनके इंटीग्रेशन की वैल्यूज को भी याद रखना है आपको कि ये क्या होता है. हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन को एज ए रिजल्ट यूज करेंगे. तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिखाया मैंने. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज फूरियर सीरीज. तो जो फूरियर सीरीज है आपकी वो हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो फूरियर सीरीज के लिए क्या है कि आपके पास माना कोई फंक्शन है, देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स विच इज डिफाइंड इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई. जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है ये इस इंटरवल माइनस पाई टू पाई इंटरवल में डिफाइंड है. इसके साथ इसका जो हम बोलते हैं
टी यानी इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। अगर हमारा फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड 2 पाई है और वो माइनस पाई टू पाई इंटरवल में डिफाइन है, तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, हम इस फंक्शन एफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं a0 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos of 2x plus a3 cos of 3x and so on plus b1 sin x plus b2 sin 2x plus and so on plus bn sin nx। तो हमारे पास यहाँ क्या है कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास, we have a function f(x) which has the period t equals to 2 pi and defined in the interval minus pi to pi, then the function f(x) can be written in terms of cos and sin in the following form, such as f(x) equals to a0 plus a1 cos x plus a2 cos 2x plus a3 cos 3x and so on plus b1 sin x, b2 sin 2x, b3 sin 3x and so on। तो we can write this as summation form में a0 plus summation n from 1 to infinity, here a n cos of nx plus b n sin of nx। तो हम इस फॉर्म को, जो फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन होगा आपके पास जो गिवन होगा, उस फंक्शन को हम ये a0 a n b n cos nx sin nx इनके फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो, ये जो फॉर्म है, ये फंक्शन की फूरियर सीरीज फॉर्म कहलाती है। और ये जो आपके पास a0 a n b n है, ये आपके फूरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब these are called the Fourier coefficient of Fourier series a0 a n b n। यहाँ जो n है आपका 1 to infinity है, क्योंकि a0 जो n इक्वल्स टू 0 वाली टर्म है उसको हमने a0 लिख के साइड में कर दिया है। और ये a1 cos x, a2 cos 2x, a3 cos 3x and so on, b1 sin x, b2 sin 2x, bn sin nx। अब यहाँ पे देखो ये भी है कि हमने b0 क्यों नहीं लिया, जब हम n को 0 रख देंगे, ये sin nx है, वहाँ अगर n को 0 रखेंगे तो sin ऑफ 0 हमारा 0 हो जाता है, तो इस केस में आपका b0 खत्म हो गया। और जब हम an cos nx में n को 0 पुट करेंगे तो cos ऑफ 0 1, तो a0 आया तो हमने a0 लिख दिया। तो हम इस फॉर्म को समेशन फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसका कैसे लिख दिया, a0 plus summation n from 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx। तो आपके पास कोई भी फंक्शन है, हम उस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाए अगर उसका पीरियड 2 पाई है, अब वो इंटरवल डिफाइन है माइनस पाई टू पाई, तो जो फंक्शन f(x) का ये जो फॉर्म है ये इसकी फूरियर सीरीज कहलाती है। और यहाँ जो आपके a0 an and bn है, ये आपके कोफिशिएंट्स ऑफ फूरियर सीरीज कहलाते हैं। here a0 an and bn are Fourier series coefficients या coefficient of Fourier series, Fourier series coefficients। यहाँ आपके a0 an bn Fourier series के coefficient है। तो आपके पास अभी आ गया। अब आप मुझे बताओ कि मैं आपको कोई फंक्शन दूँ, हमें इस फॉर्म में लिखना हो तो हमें यहाँ बेसिकली फाइंड क्या करना है, a0 n और bn फाइंड करना आ जाएगा तो हम रख देंगे, क्योंकि sin nx और cos nx ये तो टर्म्स है, n की वैल्यू 1 2 रखेंगे। तो हमें यहाँ बेसिकली चाहिए क्या, किसी फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें a0 an और bn इनकी वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब a0 an और bn की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फूरियर ने जो फॉर्मूला दिया था, हम उस फॉर्मूला को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a0 कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ a0। देखो जो हमारा फंक्शन है वो क्या कहता है, फूरियर सीरीज में फंक्शन f(x) को इस फॉर्म में लिख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos of nx प्लस bn sin of nx। हम जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को फूरियर सीरीज के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख दिया हमने हमारे फंक्शन को। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिटवीन
माइनस पाई टू पाई, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो इसी इंटरवल में डिफाइंड है माइनस पाई टू पाई, तो इक्वेशन 1 है उसको हम माइनस पाई टू पाई एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस पाई टू पाई के मिड में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स इन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज माइनस पाई टू पाई ए जीरो डी एक्स। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है हमारा वो लीनियर होता है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी हम इसे लिख सकते हैं माइनस पाई टू पाई, ये आपका टर्म है समेशन ए एन कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स dx, here n is from 1 to infinity, ये आपका सम है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो a0 तो आउटसाइड ऑफ द साइन और माइनस पाई टू पाई dx प्लस नाउ सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन साइन इज basically denoting the summation, so changing the integration and summation sign, we can write the summation n from 1 to infinity, and this is our minus pi to pi a n cos of n x dx plus minus pi to pi b n sin of n x dx. Now this is what a0 x time minus pi to pi plus summation n from 1 to infinity. Here the a n is constant, so it is outside of the integration sign. Now just before starting the Fourier series, I have showed you some important results. So use applying these results, minus pi to pi cos of n x dx is what 0. Similarly here b n is outside of the integration sign, and now the value of minus pi to pi sin of n x dx is what 0. So here we get that minus pi to pi f of x dx is equals to a0, this is pi minus pi, this is 2 pi plus 0. So here you can say that a0 is equals to 1 upon 2 pi minus pi to pi f of x dx. तो ये हमारे पास जो हमारा फूरियर सीरीज है उसमें जो a0 कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है, इसे आप इक्वेशन ए दे दो, which is what is your a0 is 1 upon 2 pi minus pi to pi f of x dx. तो जो अगर आपको मैं बोलूँ कि फंक्शन x f x गिवन है तो हम a0 इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नाउ वी हैव द फॉर्मूला फाइंडिंग द a0, तो अप्लाइंग इट वी कैन इजीली फाइंड द a0. नाउ दिस इज द फर्स्ट कोएफिशिएंट, नाउ वी टू फाइंड द an, तो नाउ द सेकंड कोएफिशिएंट an को फाइंड करेंगे, तो वो फाइंडिंग द कोएफिशिएंट an, हमारा जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या होता है f of x is equals to a0 and from 1 to infinity an cos of n x plus bn sin of n x, ये हमारा फंक्शन है। हम हमारे फंक्शन को फूरियर सीरीज के फॉर्म में इसमें लिखते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। नाउ फॉर फाइंडिंग द an वी विल मल्टीप्लाइंग, यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by cos of n x and integrating it between minus pi to pi with respect to x. यहाँ हमने क्या किया, बेसिकली we are multiplying our equation 1 with respect to multiplying with cos of n x, this is cos of n x, and integrating it between minus pi to pi with respect to x. Then what is your equation 1? Equation 1 is now what? Minus pi to pi f of x cos of n x dx is equals to integrating minus pi to pi a0 cos of n x dx
plus this is again minus pi to pi, this value of function an cos of nx plus bn sin of nx multiply by cos of nx dx. It is clear now. This is what? Here a0 is constant, is outside of the integration sign, minus pi to pi cos of nx dx plus, now again interchanging the summation sign. Here I have forgotten to write the summation sign and from 1 to infinity. Interchanging the summation sign, this is and from 1 to infinity. The integration inside minus pi to pi. Here an, this is cos of nx and this is cos of nx dx plus this is the sign minus pi to pi bn cos of nx sin of nx dx and integration, the bracket closed. Now here we have the studied now earlier that the integration minus pi to pi cos of nx dx is what? 0. So this is a0 into 0 plus summation from n from 1 to infinity. This is an is independent of the integration sign, so this is outside of the integration sign. Now this is what? Minus pi to pi cos of nx dx. What is the value of cos of nx dx? When m equals to n, here n or n, these are equal, then this is what? Minus pi to pi cos of nx dx. M equals to n and m or n are not equal to 0, then the integration is what? Has the value pi plus, now this is summation minus pi to pi being outside of the sign. Now this is minus pi to pi cos of nx sin of nx dx. This is what? 0. Using the properties which I earlier told you. Then this is what? Summation n from 1 to infinity an pi. Here we have got the value an pi and summation sign, since we are noting the an through. This is an pi. This is our minus pi to pi f of x cos of nx dx. This is what we have get here to now. We can write that an is equals to 1 upon pi minus pi to pi f of x cos of nx dx. This is the value of the coefficient an. You can write in integration equation b. So similarly we find the coefficient an. Now we have just one coefficient, which is what? Bn. So for finding bn, now the equation 1 is what? Again I am writing f of x equals to a0 plus summation n from 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx. This is our equation 1. Now for finding the coefficient bn, we will multiplying equation 1 by sin nx and integrating it between minus pi to pi with respect to x. अब हम यहाँ क्या करेंगे? बेसिकली इक्वेशन 1 को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे, sin ऑफ nx से, एंड माइनस पाई टू पाई के बीच में इंटीग्रेट करेंगे. तो व्हाट इज योर इक्वेशन 1? दिस इज 1 माइनस पाई टू पाई f of x sin of nx dx is equals to minus pi to pi a0 sin of nx
dx plus minus pi to pi. Similarly applying minus pi to infinity, this is an cos of nx plus bn sine of nx multiplying by sine of nx dx. Now this become, now a0 is the outside of the integration and minus pi to pi sine of nx dx is what? 0. Now interchanging the integration sign and n from 1 to infinity. This is your minus pi to pi an cos of nx sine of nx dx plus minus pi to pi bn sine of nx sine of nx dx. This is clear. Now here this term is 0. Now in an is independent of the integration sign, to n is outside of the sign. Now the minus pi to pi cos of nx sine of nx dx is what? 0. So here we will get summation n from 1 to infinity an into 0 plus bn. This is the integration minus pi to pi sine of nx sine of mx dx. This is what? Pi. So we will get here bn pi, or here this side is minus pi to pi f of x sine of nx dx. So we can write it as bn equals to 1 upon pi minus pi to pi f of x sine of nx dx. And these are the formulas of finding a0, an and bn. So we can summarize that. Here we have find that a0 is what? a0 is 1 upon 2 pi minus pi to pi f of x dx. This is our a0. And an is what? 1 upon pi minus pi to pi f of x into cos of nx dx. And bn is 1 upon pi minus pi to pi f of x sine of nx dx. Now if we are given any question, any function which we have to represent in the Fourier series form, first of all we have to find this constant a0, an and bn, and putting these values in the Fourier series form, f of x equals to a0 plus summation n from 1 to infinity. Here जगह नहीं है, फिर भी यहाँ लिख देती हूँ. Putting these values, f of x equals to a0 plus summation n from 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx. इस फॉर्मूला में तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, यानी वी हैव टू गिवन एनी क्वेश्चन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू फाइंड a0, an and bn and putting these values in this formula, standard form of the Fourier series f of x equals to a0 plus summation n from 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx. So we will get the solution, yeah, we will get the answer. Yeah, we can translate any form function which is the period 2 pi defining the interval minus pi to pi. We can solve, we can represent the function in the Fourier series form using this formula and applying this, finding these values a0 and an, bn. आज हम इतना ही पढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं.